Welcome back, everyone, to the Political Science lecture series. In the previous lecture, we discussed the theory of separation of powers, the checks and balances, and the functions and responsibilities of legislator. आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शंस और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसके पास कौन सी पावर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव को मिलती हैं और एग्जीक्यूटिव के प्राइमरी डोमेन में आती हैं. सो एज वी डिस्कस्ड कि लेजिस्लेटर का काम है लॉ मेकिंग और एग्जीक्यूटिव का काम है इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंटेशन करती है लॉज की जो कि लेजिस्लेटर पास करता है. तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ योर एग्जीक्यूटिव इन दैट रिकॉर्ड. द सेकेंड इज द अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन. जैसे हमने लेजिस्लेटर में देखा था इसी तरह हमें पता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो है, अगेन यू कैन कोट यूएस की एग्जांपल जिसके अंदर यूएस प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ फेडरल जुडिशियरी, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ सीनियर सुपीरियर सर्विसेज. इन सारी चीजों के अंदर कोऑर्डिनेटेड पावर एंजॉय करती है यूएस के अंदर एग्जीक्यूटिव विद लेजिस्लेटर इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट. तो ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, द कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स. लास्ट टाइम हमने जैसे डिस्कस किया था कि आपके यूएस प्रेसिडेंट के पास ट्रीटी मेकिंग पावर्स होती हैं. तो ट्रीटी मेकिंग पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में वो नेगोशिएशंस करता है, कंट्रीज के साथ डील्स करता है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ ओबामा मेकिंग for the climate change agreement, Paris Climate Accord, going for Paris Climate Accord, going for Iran nuclear deal, and Trump reversing these policies. You can quote Obama or opening up relations with Cuba as an example in this particular subheading. The fourth is declaration and termination of war. It's also a very peculiar case. Declaration of war की powers US के context में अगर हम देखें तो आपके पास प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो वॉर डिक्लेयर करे, लेकिन उस वॉर को अप्रूव अगेन सेनेट करती है. तो अगर एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है उसको अप्रूवल रेटिफिकेशन सेनेट से चाहिए. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. तो लेकिन एग्जीक्यूटिव के पास नॉनदलेस फर्स्ट पावर है टू डिक्लेयर इट. सेकंड थिंग इज कि टर्मिनेशन ऑफ वॉर की पावर्स एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूटिव के पास है यूएस में. सो वंस द वॉर हैज स्टार्टेड द प्रेसिडेंट कैन एट एनी टाइम टर्मिनेट द वॉर. तो अगर इसको तब उसको सेनेट की अप्रूवल नहीं चाहिए इन एंडिंग द वॉर. द फिफ्थ इज द सिस्टम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपके सामने जो आपका लेजिस्लेटर है वो जनरली लॉ मेकिंग करता है, मगर एक मॉडर्न दुनिया के अंदर जहां पॉलिसी मेकिंग इतनी एक्सपर्ट ओरिएंटेड हो गई है, इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गई है कि अमूमी तौर पे लेजिस्लेटर्स डू नॉट हैव एक्सपर्टीज टू मेक वेरी पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक लॉज रिलेटेड टू सर्टेन इश्यूज. आपके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने हर एक ने पब्लिक पॉलिसी में पीएचडी नहीं किया होता. जरूरी नहीं है कि आपका जो मिनिस्टर है वो खुद डॉक्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर. जरूरी नहीं है कि आपका पब्लिक पॉलिसी में आपके तमाम मिनिस्टर्स बहुत वेल वर्स्ड हो. तो इस सिचुएशन में होता ही है कि दो चीजें होती हैं. अमूमी तौर पे जो बिल होता है वो बन के ही एग्जीक्यूटिव से आता है. मैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, लाइक ब्यूरोक्रेसी, जो आपके टॉप लेवल पे सेक्रेटरीज हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, वो डिफरेंट पॉलिसीज के बिल्स ड्राफ्ट करते हैं, अपनी मिनिस्ट्रीज को देते हैं, वो मिनिस्टर्स पे पार्लियामेंट में उसको पास कराते हैं. या जो दूसरा तरीका जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि लेजिस्लेटर जनरली ब्रॉड आउटलाइंस में अब लेजिस्लेशन पास करता है. ब्रॉड आउटलाइंस का से मुराद फिर ये है कि उसमें ऐसी चीजें मौजूद होती हैं कि एग्जीक्यूटिव उसे इन्फोर्स करते हुए अपनी मर्जी से गैप्स फिल कर सकता है. सो फॉर इंस्टेंस अगर लेजिस्लेटर ने पास किया एक बिल के आपसे हमें बचत करनी चाहिए और हमें हेल्थ के डिपार्टमेंट के अंदर 10% हम बचत करेंगे, विल सेव 10% इन हेल्थ डिपार्टमेंट. तो ये बिल पास होगा पार्लियामेंट से, लेकिन वो बचत कहाँ से करनी है, किधर से कट शॉर्ट करना है, क्या टेक्निकल डिपार्टमेंट से करना है, क्या दवाइयां जहां पर प्रोविजन की जाती है मेडिसिन की प्रोविजन उधर से कट करना है, कहां से करना है, वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेगी. वो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स और नीचे उनकी जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है वो डिसीजंस लेगी.
اور وہ ان گیپس کو فل کرے گی. تو دیٹ از دا سسٹم آف ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. The sixth is the financial function. آپ کے بجٹ کو آپ کا فائنانس منسٹر عمومی طور پہ پیش کرتا ہے ہاؤس کے اندر, اس کو ڈرافٹ بھی کرتا ہے اور آنسریبل ہوتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے. فائنانس منسٹر is part of the executive and he has a lot of control and sway over financial matters of the country. Seventh is the judicial functions. Judicial functions میں خاص طور پہ ہم نے جس طرح پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پریزیڈنٹ US president appoints people at federal judiciary. تو فیڈرل جوڈیشری کے لیول پہ وہ اپوائنٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلی جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ اپوائنٹمنٹ کی کیسز میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے. دوسری جو اہم پاور ہے جوڈیشل کانٹیکس میں وہ اکثر چیف ایگزیکٹوز کے پاس, پریزیڈنٹس کے پاس پاور ہوتی ہے ٹو گرانٹ ایمنیسٹی اور ریپریو, معافی دینے کی. بیسیکلی وہ کسی بھی فیڈرل اوفینڈر کو معاف کر سکتے ہیں, کسی سزا سے اسے اس کو بچا سکتے ہیں, اس کو اپنی پریولیج یوز کرتے ہوئے, اپنی پریزیڈینشیل پاور یوز کرتے ہوئے. ایک اسپیشل پاور دی گئی ہے ایز این آنر ٹو دا پریزیڈنٹس جنرلی ہو از دا ٹاپ آف دی ایگزیکٹو. تو جوڈیشل فنکشنز اس طریقے سے پرفارم کرتی ہے آپ کی ایگزیکٹو. The last is the grant of honors and titles. Presidents in the country are empowered to give titles to various citizens for their unique contributions to the country. So poets, academics, writers, scientists, ان سارے لوگوں کو president اور آپ کے ایگزیکٹو ڈیسائیڈ کرتی ہیں ان میں سے لوگوں کو, اور ان کو وہ اسپیشل ٹائٹلز کے ساتھ جو ہے نوازتی ہے. آپ کے ملک میں مختلف قسم کے ایسے ٹائٹلز ہیں. US میں ایک جو سب سے فیمس ٹائٹل ہے which is the highest civilian honor, جسے کہا جاتا ہے پریزیڈینشیل میڈل آف فریڈم, جو کہ ریسنٹلی آپ اگر اوباما کی سیکنڈ ٹرم کو فالو کیا تو اوباما گیو پریزیڈینشیل میڈل آف فریڈم ٹو ہز وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن, جس کے ساتھ اوباما کا برومانس was all over the internet and memes. Very good couple, I mean partners. So in that regard president کے پاس یہ بھی authority ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو نواز سکتا ہے جن لوگوں نے important contributions کی ہیں. Obama gave titles and honors to numerous people at the end of his term, to Allen, to Michael Jordan, to Tom Hanks, to Bill and Melinda Gates for their unique contributions. So you see from diverse sets of backgrounds. تو یہ ایگزیکٹو ملٹیپل فنکشنز پرفارم کرتا ہے کسی بھی پولیٹی کے اندر. The next is the functions of judiciary. جوڈیشری کے جو فنکشنز ہیں وہ بڑے سمپل ہیں جو کہ ریزالو کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے گرد. تو پہلا جو فنکشن جوڈیشری کا وہ تو ہے پروویژن آف جسٹس. وہ لوگوں کو انصاف, سوئفٹ اینڈ اسپیڈی جسٹس. سوئفٹ جسٹس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک آف جوڈیشری. The idea that justice delayed is justice denied. That judiciary must give free justice to people. اور اس کے اندر the concept of rule of law is very important کہ that application of law must be equal. Judiciary کا کام ہے کہ وہ اپلائی کرے لا کو ایکولی تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی پہ, اور کسی کو اسپیشل پریویلیج نہ دے دوسرے گروپ کے اوپر, بلکہ لا کے اکارڈنس آبجیکٹیولی, امپارشلی اور فیئر طریقے سے تمام فیصلے دے. سیکنڈ از دی ایپلیکیشن آف لاز. بہت سارے جگہوں پہ ایشوز کے اوپر لیجسلیٹر جو لاز بناتا ہے یا جو ملک کے جو کانسٹیٹیوشنل لاز ہوتے ہیں وہ براڈ ہوتے ہیں اور کچھ اسپیسیفک کیسز میں اپلائی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, یا اس کو مطلب کلیئر نہیں ہوتی آپ کے لیگل فریم ورک اس چیز کے اوپر. تو جب کوئی اسپیسیفک کیس جوڈیشری کے پاس آتا ہے تو جوڈیشری اس پرٹیکولر کیس کے اندر پھر ان براڈر لاز کو اپلائی کرتی ہے اور ان کو دیکھتی ہے کہ ادھر ان کی کیا ویلیڈیٹی ہے. تھرڈ از دی رول ان لا میکنگ. جوڈیشری انڈائریکٹلی لا میکنگ میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اکثر براڈر لاز جو ایکسپلیسٹلی کسی ایک خاص اسپیسیفک انسٹنس سے ریلیٹ نہ کر رہے ہوں اور وہ اسپیسیفک انسٹنس کورٹ میں آ جائے ڈسپیوٹ, تو پھر جوڈیشری ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کو کس طریقے سے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے, کس طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے. یہ انٹرپریٹیشن
खुद लीगल सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, बिकॉज द सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट्स इज जनरली फॉलोड इन द कोर्ट्स. अकॉर्डिंग टू दिस प्रेसिडेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक फैसला दिया है तो ये फैसला हाई कोर्ट मानेगी और ये फैसला नीचे से लोअर कोर्ट्स मानेंगी. दिस इज द सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट्स, यानी मिसाल कायम करना जो मतलब होता है प्रेसिडेंट का. तो इन दैट रिगार्ड, तो फिर जब जुडिशरी कोई एक खास कॉन्टेक्स्ट में फैसला दे एक स्पेसिफिक इशू पे जिसके ऊपर ऑलरेडी लीगल क्लैरिटी मौजूद नहीं है, तो जुडिशरी का वो फैसला सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है. यानी आगे वाले उस तरह के सिमिलर आने वाले केसेस में भी उस जुडिशरी के केस को रेफरेंस बनाकर डिसीजंस दिए जाएंगे. सो दैट इज आल्सो इनडायरेक्टली जुडिशरी कंट्रीब्यूटिंग टू द evolution of the laws of the country. The fourth is the equity legislation. There are certain cases and disputes in courts for which legislation is absent, for which there is no law whatsoever. क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर तो लॉ एम्बिगुअस था ना, यानी लॉ क्लियर नहीं था या स्पेसिफिक इनफ नहीं था. कुछ जगहों पे इट्स जस्ट एब्सेंट. सो व्हाट डज कोर्ट डू? दैट इट अपील्स टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी, जिसके अंदर फेयरनेस के प्रिंसिपल, यानी आप रीजन को अपील करते हैं जजेस अपनी कि अब यहाँ पर लॉ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं फेयरनेस के और जस्टिस के और इम्पार्शियलिटी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करूं तो क्या बेस्ट डिसीजन होगा. तो उस बेसिस पे फिर वो अपने डिसीजंस देते हैं. वो डिसीजंस इन टर्न्स प्रेसिडेंट्स बनते हैं और वो एक किस्म का इनडायरेक्टली लॉ बन जाता है लैंड का. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एक्विटी लेजिस्लेशन. फिफ्थ इज द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एक चैप्टर डेडिकेटेड होता है ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस, ये सारे फ्रीडम टू हैव इंफॉर्मेशन, ये सारी फ्रीडम्स स्टेट ने गारंटी की होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर. दीज आर द थिंग्स व्हिच आर inalienable rights of the citizens, and without those fundamental rights there can be no democracy. There is no purpose of living in an organized state and modern democratic structures if the civil and political liberties of people are not safe. And to that end, the judiciary plays the most vital and essential role. Judiciary constitutional roles को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन्स की प्रोटेक्ट करती है. केसेस जब आते हैं उसके पास डिस्प्यूट्स जिसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व होते हैं वो उनको सुनती है और उनको फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन देके इनको अपहोल्ड करने की कोशिश करती है थियोरेटिकली. द सिक्स्थ इज एज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक एसेंस को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार होती है. That is why judiciary across the world generally have the power of judicial review. Judicial review की पावर ये है कि आपकी लेजिस्लेटर ने, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, वो लॉ अपेरेंटली कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्टरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल से कॉन्ट्रडिक्टरी है. फॉर इंस्टेंस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिस्टम फेडरल होना चाहिए और पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ पास किया जिससे प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर्स मिल रही हैं और पार्लियामेंट के पास बहुत कम पावर्स आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास नॉमिनल पावर्स हैं, इसका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अंडर थ्रेट है. ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहा. तो इस केस में जो आपकी जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज करते हुए ऐसी लेजिस्लेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, इसे अल्ट्रा वायड डिक्लेयर कर सकती है, विच इज सेइंग दैट इट्स नॉट वैलिड. तो जुडिशरी uses the power of judicial review with which it can declare ultra vires any piece of legislation if it finds the same to be in contradiction or in contravention to the constitution. तो इस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क को जुडिशरी प्रोटेक्ट रखती है. ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये आपकी जुडिशरी के पास जो उसका डॉक्ट्राइन है वो यूएस के अंदर इवॉल्व हुआ था और यूएस के अंदर फेमस मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस के अंदर ये पावर जुडिशियल रिव्यू की यूएस कोर्ट ने अपने पास ली. इस तरह डिफरेंट लीगल केसेस के अंदर जुडिशरी ने ये पावर्स डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपने अपने पास रखी. इंडिया के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इसी की एक थोड़ी डिफरेंट टेंजेंट पे एक्सटेंशन है जो कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के अंदर एस्टैब्लिश हुआ.
پاکستان کے اندر بھی جوڈیشری ان دا 18th and 21st کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے جو کیسز جب کورٹ میں گئے تھے تو پاکستان کی سپریم کورٹ ڈکلیئرڈ کہ اٹ ہیز دا پاور آف جوڈیشل ریویو، اور اس کے پاس جوڈیشل ریویو کی پاور ہے تاکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے کیریکٹر کو برقرار رکھ سکے، اسے سسٹین کر سکے. تو اس طریقے سے آپ کی جوڈیشری پرفارمز certain invaluable tasks and functions to protect the constitution, to protect the legal framework of the country. Now, rehashing all these three principles back, the initial idea about the separation of powers was that there's three organs of the state: legislature, executive and judiciary. Legislature is tasked with making laws, executive implements those laws, and judiciary interprets those laws and protects the fundamental character of the constitution. اور اس میں ان تینوں کے مختلف functions perform کرتی ہیں، اپنی primary functions، اور اس کے ساتھ ساتھ there are some ancillary functions that all these three organizations perform effectively. اب ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد وہ ہوگا یونیکیمرل لیجسلیچر اور بائی کیمرل لیجسلیچر سے. ہم نے لیجسلیٹر پہ ڈسکشن کی. لیجسلیٹر کو آرگنائز کرنے کے دو ماڈلز ہیں، یونیکیمرل اور بائی کیمرل، اور ہم دیکھیں گے ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے. ویری بریفلی اسپیکنگ، یونیکیمرل جس میں صرف ایک ہاؤس ہوتا ہے، بائی کیمرل جن میں دو ہاؤسز ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر ایک نیشنل اسمبلی ہے اور ایک سینٹ ہے. سو ویئر بائی کیمرل legislator. So we'll look at what's the difference between the two, what is the rationale for creating a second legislature, and what kind of legislators different countries have across the world. Till then, take care. See you in the next lecture.